Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Amit Goyal. नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन। Domestic stocks log a marginal gain. Sensex closes above 59,300 points. Nifty settles above 17,550 level. Gold declines below the 50,000 rupees per 10 gram level for December contracts at the MCX, and Brent crude oil hovers around $93 per barrel. आर्थिक सुर्खियों में घरेलू शेयर बाजार में मामूली बढ़त। सेंसेक्स 59,300 से ऊपर और निफ्टी 17,550 के स्तर से ऊपर दर्ज हुआ। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे दर्ज हुआ और वैश्विक बाजारों में ब्रेंट क्रूड के भाव $93 प्रति बैरल के आसपास दर्ज हुए। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी में आज मामूली सुधार दर्ज हुआ, हालांकि वैश्विक बाजारों का रुख नकारात्मक था। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 0.2% की बढ़त से 104 अंक बढ़कर 59,307 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.1% के सुधार से 12 अंक बढ़कर 17,576 पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.8% का नुकसान रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में भी 0.6% की गिरावट दर्ज हुई। Sensex and Nifty today witnessed some marginal gains. Both stock indices added even as the cues from the global share markets were negative. Sensex closed above 59,300 points, while Nifty settled above 17,550 level. Sensex rose with 104 points or 0.18% to finish at 59,307. Nifty also added 12 points or 0.07% to end at 17,576. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index fell by 0.75% and the small-cap index declined by 0.6%. In the Sensex pack, 13 companies posted gains while 17 logged losses. Axis Bank surged the most as it gained 9%, and ICICI Bank and Hindustan Unilever both climbed 2.1% each. Kotak Mahindra Bank rose 2.1%. On the other hand, Bajaj Finance declined by 3.2%. Bajaj Financial Services ended 2.4% down, and IndusInd Bank fell 1.6%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 3 sectors logged gains while 16 logged losses. BankX gained by 2.1%. Finance Index climbed 0.6% and Realty added 0.1%. On the other side, capital goods and IT, both indices declined 1.1% each. Metal and commodities, both sectors fell by 0.9% each. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,357 companies gained while 2,021 fell. Shares of 140 companies remained unchanged. अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज 7 पैसा मजबूत होकर 82.69 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। उधर डॉलर इंडेक्स 0.6% की बढ़त से 113.6 के स्तर पर दर्ज हुआ। और कार्यक्रम पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे लगता है कि शिशिर आपको आवाज आ रही है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी शिशिर, अगर शेयर बाजार की आज की दिशा और दशा के बारे में बात करें तो जहां विदेशी बाजारों का रुख उतना सकारात्मक नहीं था, लेकिन घरेलू बाजार में फिर भी एक मजबूती का रुख रहा। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप की अगर हम बात करें वहां जरूर गिरावट का दौर रहा। किस तरह से आंकते हैं, क्या कंपनियों के नतीजों ने बाजार को सहारा दिया या भारतीय बाजार की जो अंतर संरचना है वो बेहद मजबूत है, इस वजह से वो बाजार इतनी बड़ी घटनाओं के बावजूद भी एक सकारात्मक रुख बनाए रखने में कामयाब रहा? देखिए, ये संवत 2078 का अंत है और आज जो एक अहम बात थी वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे अच्छे रहे, लेकिन वो बाजार बंद होने के बाद आए। लेकिन बाजार को एक अनुमान जरूर हुआ था कि नतीजे अच्छे आएंगे। हालांकि जो पूरा संवत अगर आप देखें 2078,
वो 7 सालों में सबसे बुरे गिरावट की स्थिति को देख रहा है, लेकिन अंत अच्छा हुआ है। अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि संवत जब 2079 का जो मुहूर्त ट्रेडिंग जो सोमवार को होगा, उस अच्छी स्थिति बनेगी। आज की जहां तक बात है कि अगर आप ओवरऑल मार्केट ब्रेथ देखें, बहुत पॉजिटिव नहीं था। ज्यादातर शेयरों में हमने गिरावट देखी, लगभग 2000 शेयरों में गिरावट देखी, 1100-1200 शेयर से हमने बढ़त देखी। मुझे लगता है इस समय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी बाजारों से क्या संकेत आ रहे हैं, और सबसे इन सब में भी महत्वपूर्ण यह है कि ब्रिटेन में राजनीतिक स्थिति कैसी रहती है, वो भी कुछ हद तक शेयर बाजार की दशा दिशा को प्रभावित करेगी। एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की जो संरचनात्मक स्थिति है, उसको लेकर के कोई संदेह नहीं है, लेकिन जब आप वैश्विक माहौल में चल रहे हो तो वहां पर विश्व की घटनाएं आपको ज्यादा प्रभावित करती हैं घरेलू घटनाओं के मुकाबले। Shishir ji, apart from the market breadth that you pointed out, you mentioned also about FIIs. They were in fact the net buyers today to the tune of 439 crore rupees. This is the second day in the running that they have been net buyers in the market, even though they have been traditional sellers in the market earlier on. Now, what has led to this turnaround, and will this continue when the market reopens next week? There are two things which we have to keep in mind. What kind of interest rate movement we will see by the Federal Reserve in the coming days? This is one. And number two, what kind of government is going to take place in UK? These two will decide the movement by foreign portfolio investor and foreign institutional investor during the next. The other thing which is also going to be kept in mind about what kind of monetary stance the government of India is going to take. I mean, I beg to say, I beg your pardon, I want to add here, what kind of monetary stance Monetary Policy Committee will take. Because now there is a apprehension that there will be another rate hike. Since last Monetary Policy Committee meeting, we saw some of the members voiced against very high policy rate hike. So this time, if they go for lower policy rate hike, then there is a possibility that some kind of bullishness we will see from the foreign portfolio investors. So you mentioned about the U.S. market, the treasury yields for the 1 year and 2 year government securities, basically bills and notes, is at 4.6%. You find FIIs looking to divert some of the investment into the bond market instead of traditionally finding emerging markets to arbitrage their positions, basically the equity market. So they are looking at the bond market for stable returns because the yields are going up, or do you find them just diversifying their risk into equity and debt both? So this next 2 months are very, very critical because we will see some kind of bonus booking. Let me explain the bonus booking concept. Bonus booking means normally during the third week of December, we see a lot of selling by the foreign portfolio investors, foreign institutional investors, so that they can earn bonus. So at this moment, they are just trying to diversify their risk. They are also putting some money in the bond market, but equity will always be their first preference. So then in the month of November, we will see some more buying by foreign institutional investors. But in the December, there is a possibility that they may go for selling the stock just to earn higher bonus. शिशिर, एक बात और मैं जानना चाहूंगा, अगर घरेलू शेयर बाजार की हम खास तौर पे बात करें तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसका प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है आज के, अगर उसमें देखा जाए तो बैंकिंग क्षेत्र का जो प्रदर्शन है, इसके पीछे के जो कारण अगर मैं एक विशेषज्ञ के तौर पे आपसे जानना चाहूं तो क्या सिर्फ यही है कि क्योंकि ब्याज दरों में निरंतर बढ़ोतरी हुई तो ब्याज से आने वाली आय बेहतर हुई है, या बैंकों का कामकाज और बैंकों की संरचना में भी सुधारात्मक कार्य हुए हैं, ये दोनों का सम्मिलित नतीजा है? जो पहला मुद्दा आपने उठाया ब्याज दर का, देखिए बैंकों की वित्तीय स्थिति में एनआईएम यानी कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन का बहुत बड़ा रोल होता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन कैसे तय होता है कि अगर आप कर्ज पर ज्यादा ब्याज लेते हैं और जमा पर कम ब्याज देते हैं तो आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन हाई होता है। अभी हमने देखा है कि बीते जब ये 3 या 4 बार जब नीतिगत ब्याज दरों में बढ़ोतरी की गई है तो बैंकों ने भी अपने कर्ज पर ब्याज दरें बढ़ाई, लेकिन जमा पर उस तरह की बढ़ोतरी नहीं की गई, बल्कि कुछ मामलों में हमने उसमें कमी भी की है। तो उनका अगर एनआईएम जितना मजबूत होगा कि नतीजों को लेकर के बाजार उतना ही आशान्वित होगा और उनके शेयरों में खरीदारी करेगा।
जहां तक रहा सवाल कि बैंकों की संरचना या बैंकों के कार्यकलाप में, उनमें अब जो इंतजार है वो ये है कि सरकार विनिवेश को लेकर के क्या नीति अपनाती है, वहां पर भी लोगों की नजर होगी, और बैंकों के निजीकरण को लेकर के क्या नीति अपनाती है उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो आपका एनआईएम का ही है। Also, what about the asset reconstruction companies taking the bad debt off the balance sheet of these PSU banks? Because today they went up by 1.8%. Apart from the net interest income or the net interest margin, as you mentioned, also being factored in, would you say that with the repo rate going up, their NIM would go up? Along with that, you have the NPAs coming down. So PSU banks, as far as their future potential is concerned, is something that investors are looking to invest in because of higher returns? Certainly. To go for reduction in gross NPA, that means you have to make less provisioning. And if you are going for less provisioning, that means your balance sheet will have higher profitability. So in that situation, investors will be bullish on banking sector. So any kind of reduction in NPA, or you can say that NPA taken over by the ARCs, certainly it's a very, very welcome step from the market point of view. We also have to think about that what kind of policy or the new policy measures is the Monetary Policy Committee will have in the next meeting. That will also determine the movement in the banking stock during the next 15 days or 30 days. जिस तरह से पिछले दिनों बाजारों में ब्याज दरों में बढ़ोतरी हुई है, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो ऑटो लोन हो, चाहे वो होम लोन है, सभी तरीके के कर्जों पे ब्याज की दरें बढ़ी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर बाजार का प्रदर्शन देखें, ऑटो क्षेत्र में हमें पिछले कुछ दिनों से यही देखने को आ रहा है कि गाड़ियों के लिए भी बहुत उत्साह है बाजार में। उसी तरीके से जो नए घर खरीदने वाले हैं उनके में भी अंदर उत्साह है। इसको किस तरह से आंकते हैं? हालांकि ब्याज दरें बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं जो उपभोक्ता है उसको पहले के मुकाबले ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में उत्साह है। क्या ये माना जाए कि लोगों की परचेसिंग पावर में अभी भी बहुत दमखम है, या इसको एक विशेषज्ञ के तौर पे आप किस तरह से आंकते हैं? देखिए, एक शब्द अगर आप याद करें तो एक शब्द कोविड के बाद जो बहुत ज्यादा चला है वो है रिवेंज परचेजिंग। रिवेंज परचेजिंग का मतलब यह है कि पिछले साल 2 साल के दौरान जो आपने बचत करी, उस बचत का एक हिस्सा आप बाजार में अपनी जो भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, आपकी जो जरूरत है, उसको पूरा करने में आप करना चाहते हैं, चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, चाहे वो घर खरीदना हो। इस समय गाड़ी को लेकर के समस्या ये है कि लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं, बाजार में गाड़ी उपलब्ध नहीं हो पा रही क्योंकि चिप के शॉर्टेज हैं। तो वहां पर हमें लगता है कि हाउसिंग लोन को लेकर के और रियल एस्टेट सेक्टर को लेकर के ज्यादा उत्साह देखने को मिलेगा। वहां पे आपको ज्यादा खरीदारी देखने को मिलेगी ऑटोमोबाइल सेक्टर के मुकाबले। Shishir ji, what is the derivatives market telling you, the F&O market for the week that expired yesterday on Thursday, and for the month which will expire next week? How do you see both the movements influencing the cash market positions? Of course, any movement in cash market depends on what kind of movement we see in F&O market. And I believe that all the international factors are very, very critical from the F&O market, because when you go for the F&O market, that means you are making a commitment for a longer term or for a different date kind of thing. And when you go to spot market or cash market, you are buying immediately. So when you are going for a different date, when you are going for a longer term, there are a number of factors, the mid-term factors or the longer-term factors affect F&O market. In my opinion, the next 15 days, we will see some kind of a broader movement in F&O market, and that will have some impact on the cash market. And as I told you earlier, that there will be fresh purchasing by foreign institutional investors during the month of November. So all these things will determine the next round of market movement in the month of November. शिशिर, जैसे आपने कहा कि नव संवत्सर के दौरान जो बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, उसके दौरान आपकी समझ से निवेशकों का किस तरह से उत्साह या किस तरह से मूड बनता हुआ नजर आता है? साथ ही साथ क्या ये माना जाए कि जो अभी नतीजे आ रहे हैं वो निवेशकों का मूड और निवेशकों का उत्साह बढ़ाने में बहुत ज्यादा कामयाब होंगे और त्योहारी उत्साह तो रहेगा ही? एक चीज आप याद करिए कि पिछले कुछ समय से हमने देखा कि निवेशकों ने शेयर बाजार के बजाय क्रिप्टो मार्केट की तरफ रुख किया था, लेकिन अगर पिछले 6 महीने 8 महीने की स्थिति देखें तो क्रिप्टो मार्केट में काफी ज्यादा हमने गिरावट देखी है और लोग फिर से शेयर बाजार की ओर रुख करने लगे हैं।
अगर आप डीमैट अकाउंट का नंबर देखिए, वो 10 करोड़ के पार कर चुका है। ये वो संख्या बताता है कि लोग अब इक्विटी मार्केट में आना चाहते हैं। एक जरूर यहाँ पर उनकी चिंता ये जरूर है कि विदेशी परिस्थितियां बहुत अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी इक्विटी मार्केट में एक उत्साह बढ़ रहा है। मुझे उम्मीद है कि संवत 2079 की जो शुरुआत होगी सोमवार को, मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान हमें कुछ सेक्टर में, खास तौर पर अगर मैं कहूँ, चाहे वो आपका एफएमसीजी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, इन सेक्टर्स में हम थोड़ी सी बेहतरी आते हुए देखें। जी, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम लेते हैं एक कमर्शियल ब्रेक। लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख। आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प। और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग। आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता। बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर। 8700014242। मार्केट मंत्र कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों के हाल पर। अमेरिकी बाजारों में गिरावट से एशियाई बाजारों में भी आज आमतौर पर मंदी का दौर रहा। सिंगापुर के स्ट्रेट टाइम्स में 1.8%, हांगकांग के हैंगसेंग और जापान का निकेई 0.4% की गिरावट से बंद हुए। दक्षिण कोरिया का कोस्पी और चीन के शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी मामूली नुकसान से बंद हुए। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में लंदन, जर्मनी और फ्रांस के शेयर सूचकांक 0.8% से 1.8% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए। Shishir, your brief take on China losing its manufacturing grip in the supply chain heat map compiled by CNBC. Apparently, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, India and Taiwan have been grabbing a lot of what is manufactured as an offshore destination. What's your comment on that? And you see that as fundamentally also affecting the Chinese stock markets, which have actually come down by almost 2%. One thing we have seen cluster-based lockdown in China, and that has affected manufacturing facility there, that has affected manufacturing activities, and that is giving some kind of scope in countries like Vietnam or countries like Bangladesh or even country like India, because the manufacturers are seeing some kind of demand in various emerging economies and they need to produce. Wherever they will get any opportunity, they will shift their plant there. So China will certainly have some problem. Even now, we are seeing some kind of cluster down, and that is affecting their economic activities. If you can remember, China deferred announcing their GDP number for the second quarter because of all these reasons. Of course, they haven't given any official statement on what were the reasons behind that. So it is very clear that something is not very, what you can say, very good happening in the Chinese economy, and that will certainly give an opportunity to countries like Vietnam or countries like India or countries like Bangladesh. And the good thing about these countries are that the labor cost is much low. The only thing they have to improve is improving the economy of scale, because the China has edge on the economy of scale. So if these countries are able to improve on the economy of scale, they will be able to grab some market share what the Chinese economy is going to. Well, the yuan is also devalued against the US dollar. It's quoting at 0.14 to the US dollar. What is the yuan like right now? The Chinese monetary system is something they act on their own. They don't go by what the other countries are doing. So when they devalue their currency, what we know as the yuan or the renminbi, that is purely to have much better access or much cheaper access to the global market. But the problem is that since the manufacturing is not supporting that, then there will be problem. So that is why Chinese economy is having a lot of issues, and there is a good opportunities for countries in Southeast Asian economies or in the South Asia to get the market share. Well, let's have a look at the action from the U.S. market now. U.S. stocks ended lower yesterday as data on the labor market and comments from a U.S. Fed Reserve official reinforce expectations that the central bank will be aggressive in hiking interest rates. The Dow Jones Industrial Average Index dipped 0.3%, the S&P 500 fell 0.8%, and the Nasdaq Composite Index declined 0.6%. We are seeing a great deal of volatility in the U.S. stock market. The VIX is at
30.09. Much like our market, one day the Dow is going up, then it's falling, then it's going up, then it's falling. What is it like in the U.S. markets right now? See, if you can remember what the International Monetary Fund said in the World Economic Outlook update, they said that the UK and Europe are going to have recession next year, and the US is going to face a mild recession this year. So this is something which is very, very critical for the US stock exchanges, and that is why you are seeing very high volatility, whether we talk about Nasdaq, NYSE, and VXF exchange is showing that. So until and unless there is that fear of recession is going to calm down, we will continue to see more volatility in a US stock exchange. शिशिर, फेडरल रिजर्व का किस तरीके से आकलन रहेगा ब्याज दरों को बढ़ाने के लेकर निकट भविष्य में, और उसके असर से रिजर्व बैंक पे भी कितना दबाव या कितना आसान रहने वाला है माहौल? देखिए, अगर पिछले बार से हम अगर तुलना करें तो जिसको हम लोग टैपर टेंट्रम के नाम से जानते हैं, तो उस समय क्या हो रहा था कि आप अनिश्चितता के दौर में होते थे, आपको पता नहीं होता था कि फेडरल रिजर्व क्या करने वाला है। तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि भारतीय जो मौद्रिक व्यवस्था है उसके ऊपर असर पड़ता था, और रिजर्व बैंक के लिए भी किसी भी तरह के नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं होता था। अब क्या है कि फेडरल रिजर्व बिल्कुल एक समय से एक कमेंट्री दे रहा है। कमेंट्री उनका क्या है कि हम आक्रामक रहेंगे, हम एग्रेसिव रहेंगे। तो उससे क्या होता है कि मौद्रिक नीति समिति को अब एक निश्चित दिशा बनाने में काफी हद तक मदद मिलती है। हाँ, कुछ परिस्थितियों को लेकर के मौद्रिक नीति समिति बहुत ज्यादा अनुमान नहीं लगा सकती है, चाहे वो हम यूरोप की बात करें, चाहे ब्रिटेन की बात करें, वहां पर उनके लिए थोड़ी परेशानी जरूर होती है। लेकिन फेडरल रिजर्व की दिशा को लेकर के कोई चिंता नहीं कहना चाहिए, उनको लेकर के बहुत ज्यादा अनिश्चितता नहीं होती है। दूसरी तरफ अगर फेडरल रिजर्व का देखिए, उनका लाइन बिल्कुल क्लियर है। 8%, 8.5% के ऊपर उनका जो है वो उनकी महंगाई दर जा चुकी है, उसको वो नीचे लाना है हर हालत में, और उसके लिए जो कुछ भी कदम उठाना एग्रेसिव वे में वो उठाने को तैयार हो। यानी कि उनकी ओर से संकेत साफ है, ब्याज दरों में और बढ़ोगी। Shishir ji, right now the discount rate, which is the equivalent of the repo rate when you talk about the RBI, is at 3.25%. A year ago, it used to be 0.25% only, less than 1%. In fact, 1/4 of 1%. That's the rate at which the Fed was selling money to commercial banks. What is the extent to which the discount rate would be hiked by the end of this year to curb inflation? My expectation is, or what I can gather from the market intelligence, that it could be something around 1.5 to 1.5% at the end of, not this year, but end of the next 6 months of the next year. So during 6 to 8 months, we will see some kind of hike in the range of 1 to 1.5%, because the inflation rate is too high there, and they are finding it very difficult to contain that. One of the key tool available to them is to hike that rate. At that rate, how much it will go, very difficult to say at this moment, but what our expectation is, or what the market intelligence, from the market intelligence I can gather, is between 1 to 1.5% during next 6 to 8. So apart from the yields going up in the treasury market, we are seeing the US dollar index at 113.39. We are seeing some volatility there also. But why is it that the US dollar index is at an all-time high right now? Obvious, the reason is you can see what kind of strength the dollar is gaining. If you compare with any other currency, whether you talk about pound sterling, whether you talk about euro, whether you talk about yen, whether you talk about ruble, any currency, you will find that the dollar has gained much higher strength. So that is certainly going to affect that. And I believe that 40% of world trade takes place in dollar only. So dollar in the coming days, if we see more volatility in the crude market, and if we see more increase in the crude prices, that will have impact on the dollar. डॉलर के को अगर हम देखते हैं तो रुपए में भी काफी दबाव रहा है, और रुपया अभी भी तकरीबन 83 रुपए के आसपास चल रहा है डॉलर के मुकाबले। रुपए में कितना दबाव आता है, जबकि हम ये भी साफ संकेत हैं कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों को बढ़ाएगा, डॉलर शायद उसके बाद और भी मजबूत होगा। रुपया कितना दबाव में नजर आता है और क्या लेवल तक जा सकता है?
देखिए आज की अगर हम कीमत की बात करें तो 82.69 अगर मैं गलत नहीं हूँ, जी 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 क्लोजिंग रेट यही था। जी। और अगर आने वाले दिनों में अगर जैसा मैंने आपसे कहा कि नवंबर के पहले 15 दिनों में अगर इंस्टीट्यूशनल बाइंग, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल बाइंग है। दूसरा है कि अभी भी अगर आप देखिए फॉरेक्स रिजर्व की स्थिति लगभग 530-532 अरब डॉलर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व है, तो उसमें कुछ हद तक डॉलर को सहारा देने के लिए जो है हमारे पास अभी एम्यूनेशन उपलब्ध है। अब सवाल ये उठता है हम कितने हद तक डॉलर को रुपए को जाने दे सकते हैं, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि नवंबर के पहले 15 दिन में उस तरीके का दबाव हम नहीं देखेंगे। लेकिन हाँ, अगर तेल के भाव बढ़े, प्रोडक्शन कट हुआ है और उसका असर मिलता है तो थोड़ा सा कमजोर और होगा। लेकिन तो FIA से और दूसरी तरफ रिजर्व बैंक के इंटरवेंशन। Shishir ji, if you could come closer to the mobile phone from which you're communicating with us, then your opinion can be heard more clearly. Just briefly, could you tell us, now that the purchasing power of the dollar has increased, do you see the inflows into our markets going up, even if their borrowing cost has also correlatively also gone up? Do you see the FII movements into our market now going up? They've been the net buyers in our market for the last 2 trading sessions. They will be. That's what I'm expecting, that during the first fortnight, we will see some buying from the FII so that they can have higher bonus intake or higher bonus booking, you can say. So we will see some kind of buying, not very much. It could be in the range of, say, $15 million, $20 million, but it will have some impact during the first fortnight, but that will not be a long-term thing. That will be a very, very short-term phenomena kind. Let's have a look at the oil market now. Oil today rose around 0.5% on hopes of higher Chinese demand and output cuts by OPEC and its allies. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.80 per barrel, while WTI crude prices were at $84.90 per barrel. Well, global crude oil prices have been going up because OPEC Plus wants to ensure that they are able to earn as much, at least $100 per barrel. But US is also a key supplier, especially to India. Do you see shale coming back into the market, and at what rate is India buying oil from? See, we all know that India is buying a higher quantity from Russia, so that is giving some kind of comfort on the crude front. But still, China is building its strategic reserve in a bigger way, so there will be much more demand in the market from China. And that is going to have some impact. So apart from the overall output cut, there is a more demand for countries like China that will have an impact. The only comfort for us is since we are going to buy from the Russia. Now there is one more concern is there, since Russia is getting more and more buyers. So the discount which they are offering to India may not be very significant in coming days. This is one concern which we have to keep in mind. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर के वायदा कारोबार में सोना 150 रुपए की गिरावट से 49,995 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ। चांदी भी 935 रुपए की गिरावट से 55,705 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना गिरावट से $1,627.10 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी नुकसान से $18.30 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। शिशिर, बहुत संक्षेप में सोने में डॉलर के मुकाबले अभी कितनी चमक बाकी नजर आती है? दिवाली के ठीक पहले अगर सोने के भाव 50,000 के नीचे जाते हैं तो शायद इससे अच्छी खबर नहीं हो सकती है। रहा सवाल कि सोने के भाव को लेकर के, मुझे लगता है कि अभी इस पर दबाव बना है। जी शिशिर, कार्यक्रम में शामिल होने और महत्वपूर्ण चर्चा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर। Domestic stocks log marginal gains. The Sensex closes above 59,300 points and Nifty settles above the 17,550 level. Gold declines below the 50,000 rupees per 10 gram level for December contracts at the MCX, and Brent crude oil hovers around $93 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.